उसको मैं चुनौती दे सकता हूँ क्रीचर के साथ, आके मेरे क्रीचर से लड़े। The creature does this, the creature does that, बहुत लंबा पढ़ रहा था, तो किसी ने बोला यार इसका एक नाम रख दो। तो ऐसे ही ऑफिस में बैठे थे तो स्पेशल इफेक्ट्स वाले ने कहा गोपाल है उसका नाम क्रीचर का। और फिर धीरे धीरे वो पता नहीं वो ईमेल लिखने वाले को कोई जल्दी थी तो उसने गोपू लिख दिया। तो तब से नाम हो गया बेचारे का गोपू। और फिर शूटिंग में वही हो रहा था, गोपू कम्स हियर एंड गोपू डज दिस एंड गोपू डज दैट। So we were taking very serious shots, but we had we gave him a very adorable name called Gopu. जिस दिन भट्ट विक्रम जी ने मुझे पहली बार आइडिया सुनाया था, उस दिन एक्साइटमेंट तो बहुत हुई थी, बट मैंने आपसे एक और चीज़ बताई जिसमें म्यूज़िक होना चाहिए, तो आपने बोला था क्रीचर को भी नचा देंगे। तो बहुत अच्छी जर्नी रही विक्रम जी के साथ। Vikram Bhatt is the 21st century filmmaker. I say that here is a filmmaker, the only unique filmmaker in the South Asian space who can understand the technology like the big boys in LA do. He demonstrated this to us in Raz, and he achieves this like most of our wizards do in India at the kind of a price which the Western boys get bewildered with. आपको अगर हॉरर क्वीन कहा जाए तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आप लोग कुछ भी कह लो, मेरी पिक्चर देख लो बस। Horror queen, scream queen, just call me anything. The truth is that I have done a lot of supernatural films and all kinds of films with the element of fear. Or Creature is a creature film. It's different from ghosts and spirits and the supernatural, but still the element of fear is very eminent. So yeah, you call me anything. Fear goddess. Just give me any new name. I'm happy. What is that main reason why you keep starring Bipasha in all of these scary films of yours? Because she has beliefs in my crazy schemes when nobody else has. Yeah, absolutely. I went to her and said, Bipasha, I want to make a creature film. She said, wow, let's do it. I was like, you don't want to know more? She said, no. So that's why, because you know I'm always trying to do something different, and when you're doing something different, you need a producer like Bhushan Kumar, you need an actor like Bipasha who's just willing to trust your dream, your aspiration. कभी आने वाले दिनों में इंसान को क्रीचर बनाने की कोशिश करेंगे? हम तो हैं ही क्रीचर्स। जानवर इंसान मिक्स टाइप्स नहीं, अब हाँ, कुछ लोग तो ये समझते थे कि कोई एक शख्स आके मुझे कहा, मुझे तो पता है स्टोरी, वो क्या है कि हर अमावस को ना बिपाशा क्रीचर बन जाती है। ये कर लो बात। There have been reports of Harman is doing a cameo in the film. No. आपको मल्टी स्टारर फिल्में करना ज़्यादा पसंद है या फिर ऐसी फिल्में जिसमें आप अकेले ही सारा रोल चुरा लेती हैं, मतलब अकेले जिसमें चुरा लेती हूँ मैं रोल? मीन्स यू आर द मेन लीड ऑफ द फिल्म। आई एम वेरी बैड। मैं देखिए, मैं क्रीचर का रोल नहीं चुरा पाई इस फिल्म में। आई ट्राइड, आई टोल्ड विक्रम, कैन आई प्ले द क्रीचर? But no, it's nothing like that, ma'am. I've done a lot of multi-starrer films over these years, and I've always enjoyed the process of both. So it's equally, you know, it's as long as the idea is when you do a film, you have to connect with the film, you have to live with the experience of the film, and you have to enjoy it. When it's not enjoyable, it's very rare that it's not enjoyable, but sad when it's not enjoyable. When do we see your seductive appeal back on the silver screen? Like Jism or No Entry? I tried to seduce the creature, but it didn't work. I think the creature dies. Because there's no other way to kill the creature. So I tried a bit, but I don't know. Yeah, next few films. Bang on, I'm going to get it back.